Bismillahirrahmanirrahim. Definition of computer. What is computer? Computer is an electronic device. Computer या बिजली वाला device that accept data. So data से कहीं accept कहीं. जैसे लिखो अगर computer like 2+2 में computer था को 2+2 से कहीं accept कहीं. We have process data or they have process कहीं. Process जैसे से 2+2 is equal to 4. No process data and store data. Our data answer से कहीं store कहीं. And give result according data और data मुताबिक मुझे result है कि जिससे क्या data है आगे से वो result. सही शो. Computer is an electronic device that accept data, process data, store data, classify data, analyze data, and give result according data. मतलब computer से शेयर definition. हाँ, वो discuss different components of computer. the computer मुख्तलिफ components थे. तासो दारे computer से शेयर मुसरा components device. The input devices वही, central devices वही, और output devices. सही शो. हाँ, input devices को your devices दे. Data transfer from the outside of computer system via parallel devices to the center processing. There are many devices used to input data to the computer. Some of them are below. हाँ, no मुख्तलिफ से शायद ये कंप्यूटर बाहर devices approach भी और data जी चलता कंप्यूटर दन्ना. No the devices तस्वीर input devices. Input devices are devices through which enter data, instructions, programs into computer are called input devices. हाँ, व्यामुख सर शायद central devices. तो कंप्यूटर पर center दन्ना approach भी लेगा processor शो RAM शो हाँ, मतलब central devices दे. या गाना आखिर को मुझे सर storage devices दे. हाँ, उस मुझे इन सर central devices के दन्ना सर भी CPU यानी central processing unit. ना हो बता central processing unit किससे भी मुसरा जोगो सही नहीं सही शो. The CPU was used in computers like you and zoom in to see. वही CPU is the brain of computer. The CPU, short for Central Processing Unit, is like the brain of the computer and what. सही शो. That's the shade of the computer brain. सही शो. Brain सबसे की तेज वाले हर यूसेस पम देगा brain बांधे. चला आप CPU बांधे भी. जो सुनो इस तरह computer के CPU तेज ने तुम रहा कार हम सके. Once you understand how it works, you'll understand the computer as well. Let's remove the cover of the CPU and zoom in to see what happens inside. There are lots of different wires carrying information around the CPU. This particular CPU is called the 6502 and was used in computers. That's the shade blinking off key on key. They're transistors there. The CPU के दन्ना 1 billion transistor there. और per second के तक billion times the off key on key. सरजी आवाज़ वाले चीज़ होता they circuit पर शक्ल भी देर ज़्यादा the high complicated चीज़ देगा ना. तो पता कि wires थे पता कि ये second के से billion times on key off key 0 1 का ना. Off means 0 or 1 means on. यानी billion times पर ये से कि second के minute के ना पर ये second के billion times off key देता कि billion times में वो तो gigahertz बढ़ता हुआ कि million times बढ़ता हुआ भी megahertz. सही शो. नन सब अच्छे थे gigahertz भी. Gigahertz means billion times per second. मतलब तब उनसे ये clock rate देता बड़ा CPU के दबारा साये के देते clock हुई. Clock rate से देचे पर ये second के 2 on off blanking की. No. Like the Apple II and the Commodore 64, as well as in the original Nintendo Entertainment System. This simulation of the 6502 can be found online at visual6502.org. In every CPU, there is a particular wire that turns on and off at a steady rate to help keep everything in sync. That wire is called the clock, and the clock in this simulation is turning on about twice a second. Modern CPUs are measured in gigahertz, giga meaning billion and hertz meaning times per second. So the clock gigahertz मतलब billion times per second in modern CPUs turns on several billion times per second.
That speed is what allows CPUs to do very complicated things very quickly. However, what the CPU does during each clock tick is actually very simple, and something we'll look at more in this video. For now, we'll zoom back out and put the cover back on. The CPU in your computer might be manufactured by a company like Intel or AMD, but the type of CPU we're going to look at today is called the Scott CPU. The Scott CPU doesn't actually exist except as a design in a book called But How Do It Know by John Scott. The design of the Scott CPU is copyrighted and is being used in this video with John's permission. The book is available at buthowdoitknow.com. This is a great book that goes through each of the components in the CPU very slowly, without using a lot of overly technical jargon. If you've been looking for a book that explains how a computer works, I would highly recommend this one. So let's flip called RAM. RAM is short for random, allows all the components in the computer works, go over and plug it into the mother. CPU ज़्यादातर connection से सरदे RAM सरदे. सही शो. जैसे data राजी अवल motherboard तराजी motherboard processor तराजी processor भी आवे RAM तराई RAM भी दोबारा display तवर की. इन्हें RAM जैसे दो जल access की. ये data input की और data output की. हम data input की और में data से शे output की नु data random access memory हुई. लंबी डेटा चलता रहा अवल मदरबोर्ड तक बोर्ड तरह से सर्किट तरह से जो सर्किट ना पस पैसे की दे ट्रांसफर की टू से रैम ना बया सीपीयू था सीपीयू दोबारा बता रैम चलेगी रैम बया दोबारा था डिस्प्ले तक सही शो नो दे गोरा कर देगी पदे सीपीयू के गोरा डेटा रालो बया देके डेटा दोबारा आउटपुट शी बया दोबारा रैम के मिला इनपुट हम की आओ आउटपुट हम की ना रैम तो दो जल्दी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हुई हाँ और रैम तो लगे गोरा पर सीपीयू के में मुझे दो यूनिट थे The other components. It tells the ALU what type of operation. Arithmetic logic unit के मुझे calculation की प्लस माइनस ज़रूर तकसीम वगैरह टूल मुझे To perform. The ALU performs the operation and then outputs the answer. Instructions. Sometimes, though, depending upon the type of it, कुम डेटा राजी और कुम डेटा जीस डेटा सेंड डेटा रिसीव डेटा इनपुट डेटा आउटपुट न इनपुट आउटपुट से अलग से शेयर कर देगा कंट्रोल यूनिट कर दें आओ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसी की गई कैलकुलेशन हो अरिथमेटिक करना पड़ेगी कि सही शो instruction, the output from jump if, which we'll see, is add number enable wire with their own set of output wires that go direct group of wires that connect. दाम सरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दे दाम सरा control unit. Multiple components inside wants to save that number too. The ALU instruct what type of operation if the next instruction from RAM. So now, once the instruction address is set into the memory address register, it is automatically sent to RAM since the memory address register doesn't have an enable wire. The control unit then turns on the enable RAM wire, and RAM automatically sends back the data at that address, which in this case turns instructions will instruct more complex address, and that port address. No, देखिए हम सरा central processor unit की करना, हाँ, कुम यो दो unit थे, यो CPU दे, control unit थे, यो ALU. Arithmetic logic units के tool हम सरा arithmetic calculation दे, arithmetic means plus minus ज़रूर तक़सीम. और logical means देखिए and or वगैरह logical area performance logical operations like is equal to less than greater than वगैरह सही no the logical reason सही शो हाँ बिया storage मुझे primary storage memory मुझे RAM दे RAM मुझे random access memory जो बार बार access की है और RAM के data से भी temporary से भी सभी temporary ये तरसो चे computer on देगा ना वो देखिए डेटा आश्ता है कल कंप्यूटर रिस्टार्ट शो डेटा लेना से शी खत्म शी या ऑप्शन जिससे रिस्टार्ट शो या ऑफ नो डेटा लेना खत्मेगी नो द एक्शन तो वोलेटाइल हुई सो वी volatile is the action that starting it stand for RAM चलेगा ना मुझे random access memory or read and write memory basic information and either for them written from the RAM is called volatile गोरा volatile से तो वही जो restarting से रहा हर एक चीज़ खत्मेगी semiconductor memory it is a memory that whose information can be erased or changed temporary memory anything that stored in the RAM
is lost when the computer is switch off. कल switch off शे computer या restart शे ना ये सारा RAM में सीखीगी data खत्म ही ROM से चले मुझे सारा रहेगा CD ROM DVD ROM का नाम ROM stand for read only memory. Information can be read from the ROM, but we cannot write information in the memory whose information can be turn off the computer. These are like a non-volatile. Restarting सारा दे सारा उसने की data information lost की ना. सही शो. ROM is used for to store permanent program information available. Small pieces of memory is called chip. ROM की चीज़ आदन सिस्टम सेव की बच्चे किससे क्या सेव की चिप के सेव की लेका सर ROM के दागाश्त है BIOS. सही शो. That is also called non-volatile memory or semiconductor memory. सही शो. Output unit की दाता सो कर input process output. BIOS का मतलब हाँ BIOS के अंदर का the computer basic input output unit सही शो. basic input output जिसको लगता था वो इसे उस computer कला on की अवल चीज़ से उगोरे हार्ड डिस्क उगोरे CD ROM उगोरे DVD ROM उगोरे से चेक थे. सही शो करना तो ये कंप्यूटर यूज़ किया अवल बस CD ROM से ब्लॉक की बिहार पर से हार्ड डिस्क लाइटिंग कहीं करना नो ऐसे कार दे ना तो BIOS कार ये चेक कहीं चे boot from where कुम जाइना booting होगी हार्ड डिस्क ना booting होगी क्या CD ROM किसी boot pro देगा ना booting शुरू शी तो कुम जाइना तो booting का वो वाले अगर BIOS ना बस सेटअप कर सही शो. A basic input output unit सही शो. No processor भी अब बलोरस बोल का ना जैसे पूरे 39